functionaries of criminal justice administration to this area of hierarchy of courts. So what we are actually doing is that the one of the functionary of criminal justice administration are courts, and we are taking out that functionary and discussing it in way detail in comparison to what we did with other functionaries of criminal justice administration. So while discussing about the police, prosecution, defense counsel, we touched upon a few important points, not discuss those functionaries in great detail. So there is a lot to discuss about police, there is a lot to discuss about prosecution, but we did not discuss that. We just mentioned that these are the functionaries and some important points about those functionaries. But with courts, we won't be doing that. We will discuss courts as a functionary in criminal justice administration in quite a detail. In today's lecture, entire lecture is devoted to that functionary. There we will look at the hierarchy of the criminal courts as provided under the provisions of CRPC. So we will be discussing courts as a functionary with the help of provisions of CRPC. So if you have your Bare Act with you, then keep it handy when we discuss a particular provision, mark it or underline any relevant expression or line which you think would help you to understand it in a better manner. So let's start with today's lecture. What we will do before moving on to hierarchy, we will discuss a subtopic, that is territorial division for the purpose of criminal justice administration as per the provisions of CRPC. So for having an effective and efficient criminal justice administration, it is always good to divide the territory into smaller geographical units so that we can manage the entire system in a better manner. This you can see that in every state is divided into, for the purpose of executive administration, state is divided into, anyone? State का territory is divided into, हाँ जी बताइए. Districts. ठीक है जी. Anyone else who wants to add into it? That's for the purpose. Districts are further divided into blocks. Districts are further divided into, for example, subdivision and blocks. So they both are slightly different, but yes, you have blocks also. But you can say divided into subdivisions, tehsil, talukas, and blocks. Anything else you want to add into it? Do you have anything in between district and state? Any unit, territorial unit? The zone, mandal. हाँ, mandal is known as division. ठीक है? So, for example, if you are from Uttar Pradesh or any other state as well, the name might change, but primarily state is divided into different zones, administrative zones, and that is headed on the executive side by IAS officer with the official title of commissioner. So it is also popularly known as commissionerate. For example, if somebody asks me, "Oh, what is your which is your commissionerate?" then I'll say Saharanpur is my commissionerate, because I know that my revenue officer on the revenue side sits in Saharanpur. So this is actually a division for the purpose of revenue, but it is utilized for the purpose of executive administration as well. For the purpose of executive administration as well. So what we will do, इसका तो थोड़ा सा आइडिया है ना आपको कि स्टेट डिवीजन में डिवाइड होते हैं, देन डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, देयर आर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डिवीजन. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पूछते हो कि भैया
आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, एंड ही आंसर्स यू कि भैया मेरा डिस्ट्रिक्ट महोबा है, तो आप कहोगे कि अच्छा आपकी डिवीजन चित्रकूट है, झांसी है, डिपेंडिंग ऑन इज आंसर। आप कहोगे कि भैया आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कि मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है, तो आपकी डिवीजन लखनऊ है। आप कहोगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल जालौन है, तो आप कहोगे कि भैया आपकी डिवीजन फिर से झांसी है। या बाराबंकी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो आपकी डिवीजन लखनऊ है। या फिर आपका रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, तो डिपेंडिंग ऑन योर आंसर यू वुड टेल द डिवीजन। So now what we will do, that we will try to understand the territorial division that has been created under the provisions of CRPC for the purpose of criminal justice administration on similar lines. जैसा हमने ये देखा है, ये तो that state is divided into divisions and districts, we would look at it through a criminal justice administration perspective. So if you look at section 7 of CRPC, if you look at section and hear these things very carefully, because these with these things we are familiar in our day-to-day life, but we do not know the source of that familiarity. We do not know the legal source for the things that we know from our day-to-day life. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है. इट विल गिव यू अ बैकग्राउंड बिहाइंड क्रिमिनल जस्टिस, बिहाइंड टेरिटोरियल डिवीजन टू हैव effective criminal justice administration. So if you read section 7 subsection 1 of CRPC, and if you have Bayrak with you, you can mark this section that it is relevant to understand territorial division under CRPC for the purpose of criminal justice administration. Every state shall be a sessions division or shall consist of sessions division. So what CRPC is saying, 1973, listen to it carefully, that for the purpose of criminal justice administration, either every state shall be a sessions division, or we may have a state divided into sessions division. A state divided into sessions division. So for example, if I take the example of my state, you can take the example of your state. So if I take example of Uttar Pradesh, so the first thing for understanding the first question for understanding the territorial division of criminal justice administration in Uttar Pradesh would be that whether Uttar Pradesh as a state is divided into sessions division, and if yes, in how many sessions division Uttar Pradesh is divided. So if you are from, for example, Rajasthan, then the first question that you should ask to yourself, that do I know how many sessions division are there in my state? Because that would be the starting point to have an understanding about the concept of territorial division of a state for the purpose of criminal justice administration. If you are from Punjab, the same question you would ask कि भैया क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए मुझे टेरिटोरियल डिवीजन पता होना चाहिए. एंड सपोज इफ आई बिलोंग टू पंजाब, तो मुझे ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्टेट ऑफ पंजाब में कितने सेशंस डिवीजन है. इन हाउ मेनी सेशंस डिवीजन स्टेट ऑफ पंजाब इज डिवाइडेड. देन आई कैन मूव अहेड टू नो मोर अबाउट टेरिटोरियल डिविजन्स. सो फॉर एग्जाम्पल, and I'll ask you this question later on. Now this is the first kind of territorial division that is there as per the provisions of CRPC when it comes to territorial division under CRPC. So each state in India is either one session division. That I'll tell you. That I'll tell you what is the criteria for session division. That I'll tell you. Hold on for a while. Okay? We will discuss that. Okay? So each state in India, for the purpose of criminal justice administration, shall either be one sessions division, which is not the case, I think, in any state, or it can consist of several sessions division. So you can look into your state and see in how many sessions division your state is divided. Now coming to the second territorial division, which states as per section 7 that every sessions division
shall be a district. Every sessions division shall be a district, or it may consist of districts. या तो सीआरपीसी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि हर एक सेशन डिवीजन एक जिला भी हो, या ऐसा हो सकता है कि एक सेशन डिवीजन के अंडर में एक से ज्यादा जिले आते हो. दोनों सिचुएशन पॉसिबल है. तो अगर मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लूं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? अगर आपको सेशंस डिवीजन नहीं पता है, फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? Sir, 80. 75 or 80? 80 तो 80. हैं, 75 districts. 75. So for example, in Uttar Pradesh there are 75 districts. 18 division है शायद, ठीक है? I'm not sure about it, but there are close to 18 divisions. तो अगर मुझे सेशंस डिवीजन नहीं भी पता है, और अगर कोई व्यक्ति मुझे कह दे कि इन उत्तर प्रदेश एवरी सेशंस डिवीजन इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सेशंस डिवीजन हो गई? 75. ठीक है जी. So these are the two main primary units through which we can understand the territorial division in a particular state. Okay. For the purpose of criminal justice administration, राज्य सेशंस डिवीजन में डिवाइड होगा, और सेशंस डिवीजन या तो हर एक सेशन डिवीजन shall be a district, or it may consist of several districts, or it may be divided into different districts. By and large in North India, situation in different states is not aware much about Uttarakhand or small states of Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh. But by and large situation is in UP, Bihar, Rajasthan, for example, MP, is that each session division is a district. So we follow the first part by and large, but it could consist of several districts. Normally, in those cases where a new district is created, then for a particular period of time, till the time you are creating or developing the infrastructure for a new district, you are having a जिला जेल, जिला और सत्र न्यायालय, वो सारी जब आप apparatus create कर रहे हो for a new district, till that time the new district may be part of an existing sessions division. उसी जिले का पार्ट होगा, सेशन डिवीजन का पार्ट होगा जिस जिले से वो अलग हुआ है नया जिला बनने के लिए. नॉर्मली ऐसा होता है. So for example, when Bagpat was created as a new district by carving it out from Meerut, so for a considerable period of time, the sessions division for the district of Bagpat used to be Meerut sessions division. So now there is one other way of creating territorial division, for the purpose of criminal justice administration. अब तक हमने क्या देखा कि राज्य सेशंस डिवीजन में डिवाइडेड है, एंड एवरी सेशंस डिवाइसेस कुड बी अ डिस्ट्रिक्ट, और इट कैन बी डिवाइडेड into districts. But there is one more way to create territorial divisions for the purpose of criminal justice administration. That is that state government by way of notification can recognize or declare a town or city, basically a city or urban area, with a population of 1 million or more than 1 million, with a population of more than, not 1 million, more than 1 million, as a metropolitan area. So this is another kind of division under CRPC, wherein what you are doing is that you are recognizing an urban area having a population of more than 10 lakhs to be a metropolitan area for the purpose of criminal justice administration. Now, this is up to the state government in which that metropolitan area exists. वो राज्य सरकार निर्धारण करेगी इस बात का कि हम अपने किस शहर को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं. ठीक है, बस उसका रिक्वायरमेंट ये है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मेट्रोपॉलिटन एरिया इज दैट its population must exceed more than 10 lakh people. If it has less than 10 lakh people, then that city cannot be declared as per the provisions of CRPC section 8 as a metropolitan area. If
a city or urban area has been declared by the state government under section 8 of CRPC to be a metropolitan area, then as per the proviso of section 7, that metropolitan area shall be treated to be a separate sessions division. That metropolitan area can be treated to be a separate sessions division, or that metropolitan area can be divided into several sessions division. So when CRPC was enacted, at that point of time, under the old CRPC, which was enacted in 1898 and repealed in 1973, 4 cities in India were declared by their respective state governments as metropolitan area: Mumbai, Chennai, and Kolkata, Calcutta, Bombay, and Madras. So, along with that, Ahmedabad. So these 4 cities were declared by their respective state governments as metropolitan area. So therefore, the new CRPC gives them the same status. It is saying under section 8 that from the commencement of this code, each presidency towns of Bombay, Calcutta, and Madras, along with the city of Ahmedabad, shall be deemed to be a metropolitan area. And this metropolitan area can further be divided into sessions division, and those sessions division could either be a district and can further be divided into districts. Now, in the hierarchy of criminal courts, आपने देखा होगा कि आपको ये वाला एक हायरार्की अलग से देखने को मिलता है, that you have the office of chief metropolitan magistrate, additional chief metropolitan magistrate, metropolitan magistrate. तो ये जो हायरार्की है of different criminal courts with the name of metropolitan magistrate suffix to it. So this hierarchy is created because CRPC is emphasizing a situation wherein a state government may declare an urban area to be a metropolitan area. और जैसे ही आपने किसी अर्बन एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया, तो फिर जो वो आपका पैटर्न है टू हैव ए टेरिटोरियल डिवीजन फर्स्ट बाय डिवाइडिंग ए स्टेट इनटू सेशंस डिवीजन एंड देन टू हैव डिस्ट्रिक्ट्स अंडर इट, वो वाला पैटर्न यहाँ लागू नहीं होगा. You have to create a new pattern. If you have declared a metropolitan a town to be a metropolitan area, तो वो metropolitan area अपने आप में एक session division हो जाएगी, या फिर you can divide it further into several sessions division. Now today the list is longer. It is not same as it was in 1973 that there are only 4 metropolitan areas, because we have traveled a lot since 1973. So for example, Delhi is also a metropolitan area for the purpose of CRPC. So if you go to magistrates courts of Delhi, then their designation would not be chief judicial magistrate or chief judicial magistrate first class or judicial magistrate first class. Rather, their designation would be chief metropolitan magistrate or assistant chief metropolitan magistrate and metropolitan magistrate. So this is about the third, or I would rather call it a second division, territorial division under CRPC. वैसे दोनों आपको पता सेक्शन 7 पढ़ के चल जाएंगे, बट मेट्रोपॉलिटन एरिया में थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई किस एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं. सो नंबर 1, इट मस्ट बी एन अर्बन एरिया, अ सिटी और टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन दैट इज एक्सीडिंग 1 मिलियन पीपल. एंड तो वो स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन है कि वो उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करना चाहती है या नहीं चाहती है. क्योंकि अगर सेम नियम हम अप्लाई करें तो उत्तर प्रदेश में तो काफी मेट्रोपॉलिटन एरिया क्रिएट हो जाए, बट मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है उस तरीके का जिस तरीके का इज बीइंग एनवर्सेस्ड अंडर सीआरपीसी. सो इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डिवाइड और टू रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर अ पर्टिकुलर अर्बन एरिया टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. अब वापिस जाते हैं, ठीक है. नाउ ट्राई टू विजुअलाइज दिस डिवीजन जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ, इस वाली चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, what CRPC is providing for, that the entire territory of India can be divided into states, is divided into states, for example, and union territories as well, ठीक है. So that would be a slight problematic area which we will leave for a while, but entire territory of India is divided into states,
and each state for the purpose of criminal justice administration is divided into sessions division or metropolitan area. So the idea here is that this metropolitan area should be given a specific treatment. तो जब आप बोलते हो that every state is divided into sessions division, वो बात तो ठीक है, but आपको ये नहीं बोलना चाहिए that every state is divided into metropolitan area. No, because first a metropolitan area is created, then it is divided. A state is to be divided the moment a territory is given the status of a state as per section 7 of the CRPC for the purpose of criminal justice administration. वो स्टेट या तो एक सेशन डिवीजन होगा या एक से ज्यादा सेशंस डिवीजन होगा, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर मोर देन वन सेशन डिवीजंस. तो स्टेट को हमने सेशंस डिवीजन में डिवाइड किया. सेशंस डिवीजन को वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम चाहें, नहीं तो ईच सेशन डिवीजन वुड बी अ डिस्ट्रिक्ट and districts can further be divided into this. I did not discuss with you, but as per your general knowledge, districts are divided into subdivisions for the purpose of criminal justice administration. This we know because districts are divided into some subdivision for the purpose of civil administration as well. क्योंकि जिला जो है वो डिविजन्स में डिवाइड होता है, और जिले का जो हेड होता है on the executive side is district magistrate, और जो सब डिविजन्स के हेड होते हैं they are subdivisional magistrate. तो ये हम थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी सेम आंसर we can give that state is divided into sessions division for the purpose of criminal justice administration. Sessions division could either be a district or may be divided into several districts, and districts can be divided further into subdivisions. या फिर ऐसा हो सकता है that a state government may declare a particular area to be a metropolitan area, and then that metropolitan area could be one session division or divided into several sessions division, and then the same thing would follow. Divided could be a district or divided into districts, and later on it would trickle down up to the level of subdivisions. So under CRPC, these are the three kinds, or if you want to extend the discussion further, 4 kinds of territorial divisions that has been envisaged under provisions of CRPC: sessions division, districts, metropolitan area, and subdivisions. But metropolitan area you should study by separating it from these 3 divisions, because all these 3 divisions would fall under metropolitan area as well. मैं इसको सिंपल बनाने के लिए ऐसे भी समझता हूं कि पूरे भारत की टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया, and then states are further divided into sessions division, districts, and subdivisions. Metropolitan area are further divided into sessions division, districts, and subdivisions. ये मैं आसान सा अपने लिए समझता हूँ समझने के लिए कि भैया in our legal system, Indian legal system, criminal for the purpose of criminal justice administration, Indian territory or territory of Union of India is divided into states and metropolitan area. States are further divided into sessions division, districts, subdivisions. Metropolitan area are further divided into sessions division, districts, and subdivisions. So this is in brief about an introduction on different kinds of territorial divisions. अब दूसरा सवाल ये आता है, पहला सवाल तो ये हो गया, these are the different territorial divisions for the purpose of criminal justice administration. Now, before moving on to some questions, the answer of which you should know as a law student or as a vigilant member of the society, before moving on to those questions, now somebody asked कि भैया ये कैसे निर्धारण होगा कि कौन से एरिया को सेशंस डिवीजन बनाए और कितनी सेशंस डिवीजन बनाए? तो इसके लिए you have to read subsection 2. State government after consultation with High Court is empowered under section 7 subsection 2 to create sessions divisions and districts. Not only creation, but state government can also exceed their number, limit their number, alter their territory in any manner, in any manner whatsoever which it thinks fit to be. जैसा भी उसको reasonable लगे, वो पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी है. बस द ओनली राइडर इज because these territories are being divided for the purpose of criminal justice administration, you have to keep High Court in loop while creating any division or district or altering the limits of any division, sessions division or
districts, any sessions division or district. Now, next point, state government, if it wants, with consultation with High Court, may divide the district into subdivisions, and limit the number, alter the boundary of such subdivisions or numbers of such subdivision. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि फॉर एग्जांपल गाजियाबाद जिले में 5 सब डिवीजन होनी चाहिए तो 5 रख सकती है, उसको लगता है 8 होनी चाहिए वो 8 रख सकती है. इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट सब डिविजन्स, to alter their territory or boundary. It is up to the state government. So this question, that how it shall be decided which area is going to be part of which subdivision, how many subdivisions shall be there, what shall be the boundary of these subdivisions, how many districts are going to be there, what is going to be their boundary, how many subdivisions are going to be there under a particular sub district, all these questions shall be decided by the state government. But because it is criminal justice administration का territorial division, state government is required to consult with the High Court before creating any subdivision, district or sub-district, or before altering the boundary of any sessions division or district or subdivision. Now the question which you should ask to yourself, there is no need to answer these questions, but you should be aware about which is your sessions division. You should know it. अगर आप कहीं पे XYZ जगह आपका अभी रेजिडेंस है, जहाँ के आप मूल निवासी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया विच इज योर सेशंस डिवीजन. अगर आप दिल्ली पढ़ने आ गए और आपने किराए पे कहीं मकान लिया हुआ है या कमरा लिया हुआ है, यू शुड नो विच इज योर सेशंस डिवीजन. इज योर सेशंस डिवीजन कंसिस्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट or it consists of more than one district, and how many subdivisions are there in your districts? These are few questions, the answer to which you should know if you are living anywhere in the country. So this is briefly about territorial division under CRPC. If you have any question, you can ask on this point, then we'll move on to then we'll move on to understand the hierarchy of the courts, and it will become easier to understand it now. If you understand the hierarchy of territorial division, state to session division and then to district, then you can easily understand the hierarchy of the courts with the help of CRPC provision. So if you have any question, you can ask, otherwise we'll move on to the next thing. Now let's look at it. Look at this hierarchical chart of criminal courts in India. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए. Sir, what is the difference between sessions division and subdivision? There is a lot of difference. Sessions division will be a territorial division wherein state government would create sessions court, and it will come well above in the hierarchy of criminal courts in comparison to subdivision. Subdivision is the smallest territorial division ka entity which could be created under CRPC, and it is a district which shall be divided in subdivisions. तो डिवीजन वर्ड से कंफ्यूज मत हो. एक है सेशंस डिवीजन, a state is being divided into sessions division. एक है सब डिवीजन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर रहे हो आप इनटू डिविजन्स. और सर सेशन डिवीजन में हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? जैसे स्टेट को, राज्य को. ओके. हाँ, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेशंस डिवीजन. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आपका राज्य कौन है, आप जवाब देते हो फॉर एग्जांपल कि मेरा राज्य राजस्थान है, तो अगर वो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की पहली यूनिट आपसे जानना चाहेगा तो आपसे पूछेगा इन हाउ मेनी सेशंस डिवीजन योर स्टेट इज डिवाइडेड. तो फिर आप उसको जाओ, फिर आप ये बोलोगे कि आपके सेशंस डिवीजन में एक जिला है या एक से ज्यादा जिले हैं? हर एक सेशन डिवीजन में एक जिला है. ठीक है जी.
मैं नहीं करूंगा जी दिल्ली के लिए एलेबरेट, दिल्ली का जो रहने वाला है वो व्यक्ति एलेबरेट करेगा। मैं तो इतना बता दूंगा आपको कि दिल्ली इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी इफ एन एरिया हैज बीन declared to be a metropolitan area, it means it's urban area, its population is more than 10 lakh. दिल्ली का population is around 2 crore. So Delhi is a metropolitan area, and now metropolitan area for the purpose of territorial division in criminal justice administration is divided into sessions division. तो दिल्ली में कितनी सेशंस डिवीजन है ये जो दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है उसको ढूंढ के बतानी चाहिए। और फिर दैट सेशंस डिवीजन कुड बी वन डिस्ट्रिक्ट और मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में जितनी सेशंस डिवीजन है, क्या हर एक सेशन डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट है या एक सेशन डिवीजन के अंदर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एंड देन ईच डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। सो दिल्ली में जितने 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने सब डिवीजन में डिवाइडेड हैं। तो ये सब इज फूड फॉर थॉट फॉर समवन जो उस जगह का रहने वाला है। ठीक है जी, मैं तो आपको एक स्केलेटन बता सकता हूँ कि कानून के हिसाब से ये सिस्टम होगा। तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया है कानूनन रूप से बिकॉज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। नंबर 2, if it is a metropolitan area, then as per CRPC, this entire metropolitan area could either be one session division or could be divided into several session division. मुझे लगता नहीं है दिल्ली में एक ही सेशन डिवीजन है। I think it is divided into several sessions division, and then you can ask further question कि एक सेशन डिवीजन is a district in Delhi or it has more than one district. I think every session division is a district by and large, जितना मुझे लगता है, and then district can be further divided into subdivisions. ठीक है जी। If you are able to answer these two questions, then I can safely say that you will understand section 7-8 or the topic of territorial division under CRPC for the purpose of criminal justice administration. ठीक है जी। Now we'll move to the next thing, which is hierarchy, to understand hierarchy with the help of this territorial division. Now, if a state is divided into sessions divisions as per CRPC, it has to be divided into sessions division. It could be one session division also, but ऐसा है नहीं शायद कहीं भारत में कि हर एक स्टेट में एक ही सेशन डिवीजन हो। There are multiple session division divided into sessions division. Then, what is going to be the name of the court of that sessions division? What would you call that court to be? Sessions court. सेशंस कोर्ट। ठीक है। सो उस सेशंस डिवीजन में फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन यू विल क्रिएट अ सेशंस कोर्ट। हु इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर दैट कोर्ट? हु इज गोइंग टू मैन दैट कोर्ट, सेशंस कोर्ट को? सेशंस जज। ठीक है जी, इतना तो हमें आइडिया लग गया। ठीक है। नाउ let's go back to CRPC. CRPC क्या कहता है इस बारे में? Yeah, if you read section 9 and 10 of CRPC and do buy a bare act, मतलब if you are serious about studying CRPC, buy a bare act, start reading it. ठीक है। If you are very serious about buy a bare act, whatever provision I am referring to, give a reading to that particular provision. So if you read section 9 and 10 of CRPC, 8 के बाद सीधा 9 आता है। 9 से शुरू हो जाता है कोर्ट्स के बारे में डिस्कशन। ठीक है, और जजेस के बारे में डिस्कशन। ठीक है जी। इफ यू रीड सेक्शन 9 यू विल फाइंड दैट स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ सेशंस कोर्ट फॉर एवरी सेशंस डिवीजन बिकॉज वी हैव डिवाइडेड स्टेट इनटू सेशंस डिवीजन। इफ यू रीड सेक्शन 9, नाउ सेक्शन 9 इज टेलिंग यू कि जो पहला काम था वो तो कर दिया आपने क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आपने स्टेट को सेशंस डिवीजन में डिवाइड कर दिया। अब जो दूसरा काम है वो यहाँ पे कोर्ट बनाना पड़ेगा, एंड दैट क्रिमिनल कोर्ट वुड बी नोन एज सेशंस कोर्ट, सत्र न्यायालय। तो एक सत्र न्यायालय बनाएगा, लेकिन ये कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इट विल बी क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ अब खाली बिल्डिंग से तो काम चलेगा नहीं। You need trained people to decide criminal cases in that premises of sessions court.
So then you will appoint the presiding session judge. Presiding session judge, who is going to be appointed by High Court. Who is going to be appointed by High Court. Now that presiding session judge will be overburdened, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्रिमिनल लॉ का मुकदमा फाइल होगा रोज, या एक हफ्ते में एक ही मुकदमा फाइल होगा और उसको सुनवाई के लिए एक ही मुकदमा आएगा. तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, व्हेन यू आर creating a sessions court and you are appointing a sessions judge to head that sessions court, CRPC provides that High Court can also appoint additional session judges जो कि उस सेशन जज को हेल्प करेंगे, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जजेस. तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन से जज होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट. ठीक है जी. हाँ कि जी साधारण सी बात है. इफ यू रीड सेक्शन 9, तो जो सेशन डिवीजन क्रिएट करके हमने वहां पे एक सेशंस कोर्ट बनाया है, उसको हेड तो करेगा एक सेशन जज, who shall be appointed by the हाई कोर्ट. और फिर उसको हेल्प असिस्ट करने के लिए सेशंस कोर्ट में हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस. तो ये हमारा एक हायरार्किकल जो ब्लॉक है वो पूरा हो गया. ये पूरा हो गया. पहले हमने स्टेट को डिवाइड किया सेशंस डिवीजन में, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड ए कोर्ट. Could anybody answer why state government has been given the power to create a court and High Court is given the power to appoint judges? दोनों अलग अलग हैं. थोड़ा इसको मतलब you should note like merge the line or difference between them. कोर्ट क्रिएट की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा और जज अपॉइंट किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा. ठीक है जी. Can you put in little bit effort into it and tell why court is being created by the state and judge is being appointed by the High Court? Sir, bit confusion is there. मतलब I'm not sure, but पढ़ा ये था कि जो अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू होता है. नहीं, वो तो सर्विस में अपॉइंटमेंट होता है. सर्विस में जो अपॉइंटमेंट है अब तो वो भी हाई कोर्ट के थ्रू होता है हर एक जज लेवल के हायरार्की के जज का. अगर आप लोअर जुडिशरी से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज बनते हो तो भी राजस्थान में तो हाई कोर्ट ही वो कर रहा है, एग्जाम करा रहा है. हाँ, अपॉइंटमेंट गवर्नर की सील के थ्रू होता है. आई एग्री विद यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट यहाँ पे बात अपॉइंटमेंट की नहीं है कि सर्विस में कितने लोग हमने रिक्रूट किए हैं. यहाँ पे बात है किसी कोर्ट में, भदोही जिले की सेशंस कोर्ट में जज बनाना है किसी को, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? हाई कोर्ट. ठीक है जी. तो आपके सवाल में और जो मैं सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आप बात कर रहे हो इनिशियल रिक्रूटमेंट की, जो जज भर्ती हो रहा है अभी उसको पोस्टिंग नहीं मिली है कहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ सामान्यतः भाषा में कि पोस्टिंग कौन करेगा. तो ये अपॉइंटमेंट इज नॉट समथिंग अपॉइंटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जुडिशरी. इट्स लाइक यू आर अपॉइंटिंग ए सेशंस जज और एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज टू मैन अ कोर्ट, in a particular sessions division. तो ये तो हो गई आपकी प्राइमरी हायरार्की. हाँ, that is also a reason. But अगर आप देखो तो it is number 1 to maintain the separation of power का concept के because High Court exercise the supervisory jurisdiction on all sessions division, so therefore High Court has been given the power to appoint session judge as well as additional and assistant session judges. Number 2, court क्यों create कर रहा है state government? Because state government has the powers to decide on the budget and finances. उसको legislative branch के through it can get it cleared. तो उसके लिए you need resources to create a building and infrastructure. That is why court is being created by the state government. तो ये जो आप हायरार्की में यहाँ पे देखते हो, ये जो लिखा हुआ है, इसके लिए इफ यू रीड सेक्शन 9 and 10 देन यू विल गेट सफिशिएंट क्लैरिटी फ्रॉम CRPC section 9 and 10 envisages that state government shall create a sessions court for every sessions division and that sessions court shall be presided over by a sessions judge appointed by the High Court. High Court may also appoint additional session judges and assistant session judges to help this session judge to perform the adjudicatory
functions. ये बात हो गया पूरा का पूरा about sessions court and sessions judges. Now coming to the next level, which is magistry. So what I'll be doing now, I am dividing the criminal courts at the sessions division level into two. One is court of session and other is magistry. और अगर आपको मैजिस्ट्री को थोड़ा सा समझना हो तो ये मान के चलो कि मैजिस्ट्री जो होती है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. मैजिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उसमें इस डिस्कशन में वी विल गो इन अ वाइल. पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट डज CRPC provides for when it comes to court of judicial magistrate and court of chief judicial magistrate. Now what CRPC is saying under section 12, that on similar lines as section 9, that the state government shall create a court of chief judicial magistrate and courts of additional chief judicial magistrate, and High Court shall appoint a magistrate of first class to be the chief judicial magistrate of the district. So chief judicial magistrate is the judicial magistrate of is the highest judicial magistrate का office of a district. तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जब हम सेशंस और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो लगता है कि अच्छा ये मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स कहाँ होती है और सेशंस कोर्ट कहाँ होती है. तो भाई अगर प्रैक्टिकल पार्लेंस में देखो तो होती तो जिले के स्तर पे ही है, लेकिन सीआरपीसी में थ्योरेटिकल डिफरेंस है. सीआरपीसी क्रिमिनल कोर्ट्स को दो भागों में डिवाइड करता है. एक कोर्ट ऑफ सेशन है सीआरपीसी के लिए और एक मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट है. So under section 15, CRPC provides that state government can create a court of chief judicial magistrate, which shall be presided over by chief judicial magistrate, who will be appointed by the High Court. And as we have seen in case of additional session judges, now High Court has the power to appoint additional chief judicial magistrate to assist chief judicial magistrate. Now, what is this gentleman chief judicial magistrate is doing by presiding over chief judicial magistrate का court? He is the head of all judicial magistrate in a district. Chief judicial magistrate is the head of all judicial magistrate in a district. Now, I'll ask you a question. Who is the executive head of the district? Who is the executive head of the districts? Or who is the boss of all the executive magistrate in a district? District magistrate. District magistrate. ठीक है जी. District magistrate is the head of all executive magistrate in a district. क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि किसी जिले का सबसे जो बड़ा अफसर होता है वो डीएम होता है. So in order to understand the office of chief judicial magistrate, first of all you must have a clarity about the office of district magistrate. So district magistrate is the highest officer on the executive side or judicial side in a district? Executive side. Similarly, in CRPC, who is going to be to hold the highest office among magistrates on judicial side in a district? CJM. Chief Judicial Magistrate. ठीक है जी. अभी जब मैं ये कह रहा हूं कि ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, व्हाट इज द लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज मैजिस्ट्रीज, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री एंड जुडिशियल मैजिस्ट्री? देयर पावर्स. थोड़ा सा और बताओ उसके बारे में. एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ मैजिस्ट्री? So district magistrate have more power than judicial magistrate. अरे वो उस हैंगओवर में मत रहो, आईएएस वाले में नॉर्मल बताओ कि फंक्शनल डिफरेंस क्या होगा दोनों में, कार्य क्या कर सकते हैं दोनों, अपने अपना जो उनका एरिया होगा वो क्या है, एरिया वाइज क्या लगता है आपको कि ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या काम करेगा और ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या काम करेगा? Sir, district magistrate has administrative powers of the district. ठीक है जी. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंटिव पावर्स रिलेटिंग टू क्राइम एंड पब्लिक ऑर्डर.
ठीक है जी। अब ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? एडजुकेटरी फंक्शन। हाँ, थोड़ा सा और बताओ इसके बारे में, एडजुडिकेटरी फंक्शन के बारे में। थिंक मोर अबाउट इट, लिटिल बिट मोर अबाउट इट। So basically, he will educate the dispute between citizens. तो इसको सीआरपीसी के टर्म में बोलो, एडजुडिकेट को सीआरपीसी में क्या बोलेंगे? अपराध होने के बाद एक्यूज्ड का क्या होता है, मतलब ये पता करने के लिए कि गिल्टी है इनोसेंट है? हाँ, जजमेंट, ट्रायल। ट्रायल। अब रुको एक बार यहाँ पे, ठीक है। दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट which is headed by CJM in a district shall perform few very exclusive judicial function जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं परफॉर्म कर सकती अंडर सीआरपीसी। पहला, कॉग्निजेंस लेने का काम 190 में, सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेने का अधिकार जो है इस मैजिस्ट्रेट को है, सीजेएम वाली मैजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। और कॉग्निजेंस लेने के बाद जो ट्रायल होगी उसका अधिकार भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को नहीं है, ट्रायल करने का अधिकार किसको है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। और ये जो दो फंक्शन है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, ये इसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अलग करते हैं बिल्कुल, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू वन मोर सिंपल पॉइंट। अंडर द ओल्ड सीआरपीसी देयर वाज नो ऑफिस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, बी इट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, be it judicial magistrate first class or second class, under the old CRPC. At that point of a time, district magistrate used to perform both functions, executive as well as judicial. तो जब मैं कह रहा हूं executive as well as judicial, तो 1973 के पहले district magistrate and SDMs they used to also take cognizance and conduct trials. But in 1973 का CRPC, we entered into a new era of magistry wherein CRPC provides for two kinds of magistrates at the district level. One is executive magistrate headed by a district magistrate, and other is judicial magistrate headed by a chief judicial magistrate. तो ये इसका बैकग्राउंड है, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस लॉ के अंडर अपॉइंट होता है किसी जिले में? सो ये जो ऑफिस है विद विच वी ऑल आर अवेयर विद कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस है हर एक जिले में, एंड दिस ऑफिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। देन सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स, ध्यान से सुनना इसको, एवरी डिस्ट्रिक्ट and in every metropolitan area the state government may appoint as many persons as it thinks to be executive magistrate. So CRPC is that code which gives you the legal provisions under which both kinds of magistrates are being appointed by the state by the high court and the state government. जो judicial magistrate है, they are appointed by the high court, they will perform judicial functions like taking cognizance, conducting trial and handing over the sentence, and state government will appoint executive magistrates in each district. और फिर एक लाइन लिखी हुई है जहां से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस का सोर्स मिलता है हमें, दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज district magistrate. Now this district magistrate is the head of all the executive magistrate. State government, similarly as in the case with judicial magistrate, can also appoint additional district magistrate. Now why we say कि district magistrate जो है ये highest office है on the executive side in a district, because section 23 provides all executive magistrate and all additional district magistrate shall be subordinate to the district magistrate. They will function under the supervisory jurisdiction and control of district magistrate. तो सेक्शन 15, 11 और 20 पढ़ के from CRPC we get to know that in every district
there are two kinds of magistrates in India. In every metropolitan area, if it is divided into districts, there also we will have two kinds of magistrates. One judicial magistrate, one executive magistrate. Executive magistrate shall be added by district magistrate as per section 20 of CRPC read with section 23. He will be the head of all the executive magistrate. It will perform executive law and order functions like maintenance of law and order or prevention of crime or to prevent public nuisance and other relating powers. On the other hand, judicial magistrate shall be headed by chief judicial magistrate, and it will perform judicial functions like taking cognizance under 190, conducting trial of those offences of which it is empowered to conduct a trial. It is empowered to conduct a trial. On similar lines, under section 17 and 19 of CRPC, you will find that in metropolitan areas, there shall be, in every metropolitan area, there shall be a chief metropolitan magistrate and assistant metropolitan magistrate. And under these two kinds of magistrates, you have metropolitan magistrate. So in metropolitan area, magistrate is headed by chief metropolitan magistrate. In districts, if it is not a metropolitan area, magistrate is headed by chief judicial magistrate. In case कोई metropolitan area is divided into districts, तो वहां हर एक districts में magistrate shall be headed by a chief metropolitan magistrate. A chief metropolitan magistrate. So that is why when you go back to this chart, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हायरार्की में सेशंस कोर्ट के नीचे फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आता है. इफ इट इज अ डिस्ट्रिक्ट, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंडर एडिशनल सीजीएम्स आते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आते हैं, फिर उसके अंडर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स आते हैं. ऑन मेट्रोपॉलिटन, इन मेट्रोपॉलिटन एरिया you will have CMM, then additional CMM and metropolitan magistrate. You will not have divisions of metropolitan magistrates into first class or second class. On executive side, in every district, magistrate shall be headed by a district magistrate, and under whom all the subdivisional magistrate and additional district magistrate shall perform their functions under his supervisory guidance and control. So I'll stop here because I am above my time. Do you have a class iske baad? Yes, sir. Yes, sir. We have not received yet. So I'm still left with one subtopic under it कि किन अपराधों की ये ट्रायल कर सकते हैं अलग अलग जजेस. So that I'll discuss with the help of section 28 and 29 in the next class. So what was the rationale between dividing into metropolitan areas? The idea basically is that if there is an urban area exceeding 1 million population, then the density of that particular area, number of people living in that area is considered to be huge. Population density is huge, and when there are more people concentrated at one place, then the nature and kinds of crime would multiply. And it is because of this reason we came up with this idea of having a separate criminal justice administration ka system or separate territorial division in metropolitan areas. It's a British creation. They recognized under old CRPC of 1898 big cities as a metropolitan area so that they can specifically focus on those areas. Okay, sir. Thank you. एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल कन्वीनियंस कह लो इसको, ठीक है. जैसे कि आजकल होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 5 हैज द पावर टू अपॉइंट अ पुलिस कमिश्नर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. तो हम कहते हैं ना कि ये कमिश्नरेट सिस्टम आ गया, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम. जैसे नोएडा एंड लखनऊ वर डिक्लेयर्ड टू बी कमिश्नरेट इन यूपी. तो वहां पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, he has been given all the functions that were performed by the district magistrate and executive magistrates under CRPC. ठीक है जी. इसके बारे में मैं नेक्स्ट में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको.